Over the period of time, my lord, we have sanctioned more than 100 crore rupees to DCBB Chhatarpur, my lord. That amount has been embezzled by some 24 employees of the bank. तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करिए? उसके खिलाफ आपके पास एक्शन है, FIR दर्ज करिए। FIR is already filed, my lord. तो FIR is already filed. ये मुकदमा तो जो है लास्ट पैराग्राफ, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तक्षेपकर्ता के द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 बैंक के प्रार्थी एवं प्रत्यार्थी क्रमांक 2 से 16 लगायत द्वारा किए गए वचन के अवलोक में उनके द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 बैंक के उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहायता के तारतम्य में वादग्रस्त राशि को डूबंत हो जाने से आलोक में वर्तमान अपील के निराकरण में सहायक सिद्ध होना अभिकथित किया गया है। किंतु प्रत्यार्थी क्रमांक 1 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मनादा शिवपुरी एक न्यायिक व्यक्ति की हैसियत रखती है एवं उसके द्वारा ही विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त राशि की वसूली का विवाद दावा पेश किया गया है। इस प्रकार जिला बैंक न्यायिक रूप से अपने हितों के संरक्षण कर सकती है। हस्तक्षेपकर्ता बैंक विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार भी नहीं था। इसके भी अलावा हस्तक्षेपकर्ता बैंक वर्तमान प्रकरण अंतर्गत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवश्यक उचित व हितवत पक्षकार की श्रेणी में होना परिलक्षित नहीं होता। वो खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने वसूली का दावा लगाया है। मतलब माय सबमिशन इज दिस, आप ही ने लगाया था ना वसूली का दावा। डीसीबी ने सेंट्रल बैंक लगाया या अपेक्स बैंक है कि आई एम द अपेक्स बैंक माय लॉर्ड। हमने सेंट्रल बैंक को पैसा दिया हुआ है, इसलिए वो जो रिकवरी वो कर रहा है उसमें हमें भी पार्टी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माय लॉर्ड वी हैव सैंक्शनड मोर देन 100 crore rupees to DCBB Chhatarpur, my lord. That amount has been embezzled by some 24 employees of the bank. तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करिए? उसके खिलाफ आपके पास एक्शन है, FIR दर्ज करिए। FIR is already filed, my lord. तो FIR is already filed. ये मुकदमा तो जो है DCB ने अपने लोन की रिकवरी के लिए लगाया है जिनको लोन दिया गया था, ठीक है? तो उसमें आपका क्या रोल है? आप तो अपेक्स सोसाइटी है। मतलब my submission is this directly or indirectly it's my money. I have given that money to the bank. It may be. Now, what are the provisions and as per the RBI norms? What is the role of the? We'll have to go to a larger question. What is the role of the apex bank? How they secure their advances made to the district cooperative banks? All those things. That is there is a detailed mechanism for that. But there is a mechanism, and then in these individual cases, except for giving fees to the council, there appears to be no other rationale. Well, my submission is this, my lord. If whatever the order is passed, my lord, I will be affected by that order, my lord, because Mr. Council. इस तरीके से अगर आपकी बात मान ली जाए तो जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, एक एग्जांपल समझने के लिए, वह डिपॉजिट लेते हैं, चाहे सेविंग बैंक्स हो, चाहे और अकाउंट्स हो, चाहे एफडीज हो, चाहे अन्य प्रकार के हो, तो जनता का पैसा लेते हैं और उस पैसे में से एक रेशो मेंटेन करते हुए लोन डिसबर्स करते हैं, ठीक है? एक उदाहरण समझा रहे हैं आप। तो जितने लोन डिसबर्स हुए और जितनों के खिलाफ डीआरटी में मुकदमा लगा या जो है बैंक ने 14(2), 14(3) में कार्रवाई करी, उस सब में हम सबको कि मेरा भी एसबीआई में खाता है और एसबीआई का ये बेड डेप्ट है जिसकी रिकवरी के लिए वो जो है मिस्टर अंकित सक्सेना का प्रॉपर्टी को सीज करने का नोटिस दिया है, तो मुझे भी सुना जाए। आपका अगर लॉजिक को एडवांस करेंगे, बिकॉज इट इज अवर मनी एंड एसबीआई में जो पैसा मैंने जमा कराया है वो पैसे से लोन दिया है एसबीआई ने अंकित सक्सेना को, उन्होंने उसको चुकाया नहीं है, इसलिए उनकी आस्तियों को जो है वो मॉर्गेज आस्तियों को सिक्योर कर रहे हैं। Malud, we consider in a different way. हाँ, चलिए बताइए। Malud, whenever union give any finance to the state and state is getting work executed, Malud, union becomes a necessary party. No. Union because it's a federal structure. There are two different things. Malud. Union gives money to the state under the state center finance commission, जहाँ पर एक परसेंटेज डिसाइड है कि जितनी भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका इतना परसेंटेज स्टेट को जाएगा, उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है, ठीक है? अगर सेंटर की स्कीम में पैसा आया है तब यूनियन विल बी अ पार्टी. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. मनी कमिंग टू द डीसीबी एज पर द अरेंजमेंट ऑफ center state relationship. It is not the centrally sponsored scheme which was for which work was executed, in which union will be a necessary party. Try to understand the difference and then you will find that there is no illegality in the impugned order. Likhiyega. This petition is filed by Madhya Pradesh Cooperative Bank
मर्यादित, इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं. अपेक्स बैंक मालूम. In short, also known as Apex Bank, being aggrieved of order dated 6/5/2024, passed in first appeal number 02/24. चार हैं, चारों के नंबर अलग अलग लिख ली. I'm also relying on one judgment. मालूम है, just mention it. हाँ हाँ हाँ. Para 17 and 13, which talks about ठीक है, if the ठीक है. affects. क्या लिखा? Orders dated इतना इतना है ना. Order ये चारों में लिख लीजिएगा इतना. Passed by the learned Madhya Pradesh State Cooperative Tribunal, rejecting an application under Order 1 Rule 10 CPC filed by the petitioner Apex Bank for impleadment in the matter of first appeal between the District Central Cooperative Bank, Shivpuri. Yes. Shivpuri, Shivpuri. and the persons to whom loan was given on the pretext that it is the Apex Bank, which is the federal organization. These were not the borrower, they were the employee who embezzled money. अच्छा. Borrowers की जगह employees of the District Central Bank. Next. It is submitted that employees हैं ये. Employees हैं मालूम. और इनका आपके ऊपर, आपका क्या कंट्रोल है इनके ऊपर? मतलब those my control is only with respect to the cadre officer over the cadre of the Apex Bank. Are they the cadre officers? No, they are not मालूम. They are the employee of DCCB. That since loan amount is given to by the Apex Bank to the District Cooperative Central Banks, and in turn it was embezzled by the non-cadre employees of the District Central Cooperative Bank, and a dispute is pending before the Deputy Registrar Cooperative Societies, arising out of which first appeal was filed. Before the dispute was pending, Decreed. the dispute was pending and a decree was passed in favor of the District Cooperative Bank. Yes, madam. And it ऐसा कर लेना, and a decree was passed in favor of the District Cooperative Bank. First appeal at the instance of the employees is pending Yes. before the cooperative tribunal. Therefore, petitioner, being the Apex Society, moved an application under Order 1 Rule 10 CPC for impleadment, as ultimately it is their money which is at stake. Next pair. The reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Kasturi versus Iyamapura Perumal and others, 2005 का 6 SCC 733, where drawing attention of this court to para 17, 7 and 13, madam. 7 and 13. It is submitted that Supreme Court has noted that within inverted commas 7 dot, in our view, comma, a bare reading of this provision, comma, namely, comma, second part of Order 1 Rule 10, sub-rule within bracket 2, bracket close CPC, would clearly show that the necessary parties in a suit for a specific performance of a contract for sale are the parties to the contract, or if they are dead, their legal representatives, as also, इसको पूरा पैरा कोट कर दीजिए, inverted commas closed. In para 13, it is noted that inverted commas में पैरा कोट कर दीजिएगा. Thus, it is submitted that Apex Bank is the necessary party. Next pair. After hearing learned counsel for the petitioner and going through the record, two things emerge: that Apex Bank, that is the petitioner, is the prime lender. Full stop. They extend credit facilities to the district cooperative central banks, through whom disbursement takes place in favor of different beneficiaries. Full stop. Shri Suyash Mohan Guru admits that Apex Bank has control over the cadre employees of the district central cooperative banks and not on other employees, which will fall in the category of non-cadre employees. Employee of DCCB, my lord. Huh? Employee of the DCCB, that will be a better, because they have different cadres. That is the employees of the DCCB. Full stop. Thus, it is evident that firstly, the dispute is between the DCCB
and the employees who are non-cadre employees. Full stop. Admittedly, petitioner has no administrative control over these employees, as admitted by Shri Suyash Mohan Guru. Full stop. Thus, when they have no administrative control over the, यहाँ तो सब ट्रांसपेरेंट वर्किंग है बिल्कुल से। हमारा कोर्ट जो है वो चलता है, वो जो एक बोट रहती है ना जिसमें नीचे कांच की वो लगी रहती है, तली लगी रहती है, आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं, जीव जंतु सब, ठीक है नहीं, it's like that. ठीक क्या देगा over the appealants before the learned cooperative tribunal. Therefore, and also taking this fact into consideration that even if their amount has been embezzled, they can take by individual employees. Yet Apex Bank has authority and powers to recover their amounts or suitably adjust it from the future borrowings to be made by the district cooperative bank, district cooperative central bank, comma. This court, the tribunal has rightly held that petitioner is neither a necessary party nor a proper party, and when tested, the impugned order cannot be faulted with. Petitions fail and are dismissed. Great. This judgment of Kasturi has no application. All connecting matters are same order. आपका तो कोई रोल ही नहीं है अभी। Notice have been issued. There is a stay, my lord. ठीक है, चलिए।